Dear friends, today we are going to discuss about cardiovascular drugs. So different questions comes from this chapter, like what do you mean by cardiac glycoside, or write the mechanism of action, pharmacological action, adverse effect of digoxin, or what is hypertension, classify antihypertensive agent, write notes on cardiac glycosides, or classify drugs used in angina factories. So these are the questions comes in previous year. Let us discuss about antihypertensive agent. A sustained elevation of systemic arterial pressure is termed as hypertension. So हमें देखिवा hypertension काहाकू कुआ जाए जेतेबेले ब्लड प्रेशर नॉर्मल रु अधिक हबो. That means without any interruption, that is called sustained elevation, means rise without any interruption or obstacle. जदि ब्लड प्रेशर टा बढ़ी जाउछ कोठी इन सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर or systemic artery. What is the meaning of systemic? That means in circulatory system, in systemic circulation. Already we have studied in human anatomy what is circulatory system. So in blood circulatory system or mainly in the artery, the pressure ta arterial pressure ta ko बढ़ी जाउची without any interruption, हमें ताकू कहबा termed as hypertension. So a systolic blood pressure of 140 mmHg or diastolic blood pressure is above 90 mmHg indicates in the presence of hypertension. केतेबेले हमें कहि परिबा जे गोटे पर्सन इज सफरिंग हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर. ना नॉर्मल ब्लड प्रेशर जनरली 120 by 80. That means systolic pressure or contraction pressure, that is 120 above 120, or diastolic pressure 80. That is called normal blood pressure. When higher than normal, that is 120 to 139, and in diastolic 80 to 89 roita. Then just higher than the normal blood pressure, but hypertension is above 140 and diastolic blood pressure is above 90. That is called grade 1 hypertension. And grade 2 hypertension above 160 and diastolic above 100. Similarly, grade 3 hypertension above 180 and above 110. These are the grade 1, grade 2 and grade 3 hypertension. How the blood pressure increase in our body? कहीं की blood pressure टा बढ़ुची, increase blood pressure. 3 reasons. Let us see. Increase cardiac output, increase peripheral resistance, and increase blood volume. There are 3 reasons to rise blood pressure. कहीं ना कार्डियक आउटपुट जदि बढ़ी जाए माने हार्ट रु अधिक ब्लड बाहर. केतबेले बाहर हार्ट रु अधिक ब्लड? हार्ट रो कंट्राक्शन और रिलैक्सेशन तक बढ़ी जीवो. दैट मीन्स हार्ट जो पर मिनिट 72 बीट करूची जदि सेटा बढ़ी जी 100 120 130 एभले जदि बढ़ी बढ़ी चलिबो ताले कार्डियक आउटपुट हार्ट बीट टा बढ़ी गले कार्डियक आउटपुट तक बढ़ी जीवो. जदि कार्डियक आउटपुट तक बढ़ी जाए ताले ब्लड प्रेशर तक बढ़ी जीवो. गोटे रीजन. द्वितीय रीजन कौन ना इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस. पेरिफेरल the other parts of the body. We have already discussed in anatomy. What is the peripheral region or peripheral part of the body? The periphery region means other parts of the body. What is the resistance? Means oppose. So increase peripheral resistance. That means peripheral part with the resistance.
means the other body parts mainly smooth muscle जदि contraction है, that means blood vessel जदि contract ହେଇଗଲା, जदि ସରୁ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, blood pressure ଟାକୁ ବଢିଯିବ। means जदि गोटे एग्जांपल नबा, गोटे पाइप रे बा आर्टरी रे वेन रे जति ब्लड फ्लो होउची, जदि गोटे आर्टरी गुडाक वेन गुडाक सरू हो जाए, कंट्राक्शन हो जाए, ताले सेतिकी ब्लड फ्लो हेबा पई ताको अधिक प्रेशर दरकार पड़िबो। दैट मीन्स इंक्रीज द ब्लड प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस और द स्मूथ मसल कंट्राक्शन, सेटा गोटे रीजन। सो फर्स्ट रीजन कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, यदि बढ़ी जीवो अधिक ब्लड फ्लो होबो हार्ट रो। सेकंड रीजन यदि ब्लड वेसल कंट्राक्शन हो और पेरिफेरल रेजिस्टेंस। थर्ड कौन, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, यदि ब्लड रो परिमाण टा बढ़ी जीवो। केमिति बढ़िबो ना, जनरली वी नो दैट 7% of the total body weight blood is present in our body, but volume टा यदि increase करि जीवो। So blood volume increase करि जीवो means the increase the sodium potassium। गोटे एग्जांपल लबा, गोटे पाइप रे प्लेन पानी जाउछि आ गोटे पाइप रे कादुओ पानी जाउछि, कार अधिक प्रेशर हो, कादुओ पानी। सिमिलरली इन केस ऑफ ब्लड, when the sodium potassium are retains in our blood, तले ब्लड रो वॉल्यूम टाको बढ़ी जीवो, विस्कोसिटी टा बढ़ी जीवो, तले ब्लड प्रेशर टाको अधिक हो। सो दीज आर द रीजन to increase the blood pressure or hypertension. What are the reasons? Increase cardiac output, increase the peripheral resistance, or increase blood volume. तीनटा reason blood pressure increase होबार। तले first let us discuss the increase cardiac output। काहे कि cardiac output टाको बढ़ी जाउछि ना। See in the figure, increase the activation of beta-1 adrenoreceptor on heart। यदि activation of beta-1 adrenoreceptor on heart, यदि beta-1 adrenoreceptor टाको बढ़ी जीवो, increase करि जीवो due to sympathetic activity। यदि sympathetic activity टाको बढ़ी जाए तले हार्ट रो एक्टिविटी टाको मीन्स कंट्राक्शन एंड रिलैक्सेशन टाको बढ़ी जीवो। सी इन द फिगर, beta-1 adrenoreceptor present in the SA node and myocardial region। You know that the middle layer of the heart is called myocardium, where the receptors are present. So beta-1 adrenoreceptor, when activated, the muscle layer activates, that means the contraction and relaxation the increase, as a result the heartbeat increases। or beta-1 adrenoreceptor also activate SA node, it generate impulses। यदि impulse generate टाको increase हिजबो, बढ़ी जिवो, ताले अधिक contraction और relaxation होबो, heartbeat टाको अधिक होबो एज कंपेयर टू नॉर्मल। जदि अधिक हैला हार्ट, जदि कंट्राक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट रो ब्लड टाको अधिक बाहरी, जदि अधिक अमाउंट, जदि अधिक ब्लड बाहरीला ताले सेम आर्टेरियल आर्टरी रे, ताले कोन हबो, प्रेशर टाको बढ़ी जीवो। गोटे समान पाइप रे जदि हमें अधिक पानी फ्लो करबा, कोन हबो, प्रेशर बढ़ी। First reason है increase cardiac output due to increase activation of beta-1 adrenoreceptor, which is present in the SA node and myocardium layer। Beta-1 adrenoreceptor, how it is activated? Na, in the increase in the sympathetic activity। In the sympathetic and parasympathetic chapter, we will detail discuss how it activates the beta-1 adrenoreceptor। But when it activates the beta-1 adrenoreceptor, that means
Beta 1 adrenoreceptor has the capability to activate the SA node and the myocardial region. So the contraction and relaxation or the heartbeat is increased. As a result, the cardiac output increases. So due to this region, the increase in the blood pressure. The alpha 1 adrenoreceptor. This is present in the blood vessel of the skin or mucous membrane or sweat gland, radial muscle. So mainly in the blood vessel, it function is vasoconstriction. Vasoconstriction, that means when activate the alpha 1 adrenoreceptor, the blood vessel constrict. यदि ब्लड भेसल गुड़ाक कन्स्ट्रिक्ट हो सरू हो सेम अमाउंट रो ब्लड फ्लो हो पारिबो नाही. दैट मीन्स प्रेशर टाक ब्लड भेसल रे बा आर्टेरियल प्रेशर बढ़ी जिवो. सो दिस इज द रीजन ऑफ पेरिफेरल रेजिस्टेंट increases. Let us discuss the third reason, increase blood volume. कहीं ब्लड वॉल्यूम टाक बढ़ी जाए ना जिते ब्लड रे सोडियम वाटर रिटेंशन हो जाए. सोडियम पोटासियम the solute particle remains present. It is not excreted out from our body. The blood volume ta body. Both region are several reason how the increase renin or increase angiotensin 2, how it convert to angiotensin 1 to angiotensin 2, or how aldosterone is synthesized or secretes. We'll go through detail, but when the increase blood volume, this is also one reason to increase the blood pressure or hypertension. So let us discuss the classification of antihypertensive agent or antihypertensive drugs. The classification of antihypertensive drug, first one diuretics. So थायराइड डायरेटिक, हाई सेलिंग डायरेटिक, पोटासियम डायरेटिक. देखिए the diuretic टा को जगह एवं कहीं काम कर हाउ इट हेल्प्स टू द हाइपरटेंशन. आम कही जे सोडियम पोटासियम जदि रिटेंशन हो बॉडी रे जदि रही ताले ब्लड रो वॉल्यूम टाको विस्कोसिटी टाको बढ़ाई दो देले सेम ब्लड वेसल रे ना अधिक कंसंट्रेशन रो ब्लड फ्लो हेले द ब्लड प्रेशर टाको बढ़ी छ. तेणु सोडियम पोटासियम एगुड़ा रहिले से ब्लड रो वॉल्यूम टाको बढ़ी जाउछ. तेणु हमको कोन करिया पई पड़िबो ना सोडियम पोटासियम को बॉडी रो बाहर कर देबा पई पड़िबो. सोडियम पोटासियम टाको केमिति बाहरिबो ना with the help of these diuretic drugs. Diuretics drugs. That means these are the thyroid diuretic, high selling diuretic, potassium sparing diuretic. These are the group of drugs involved to reduce the blood pressure. Similarly, angiotensin converting enzyme. Quickly, renin to angiotensin 1 to angiotensin 2, how it is converted and how the blood pressure is, blood volume is increased. So ये जो pathway हमें previously we have studied ताकू देखी थिले ये एंजाइम रो जो angiotensin converting enzyme टाकू जदी इनहिबिट कर दबा, एंजाइम टाकू जदी डीएक्टिवेट कर दबा ताले कोन हो angiotensin 2 को कन्वर्ट हे पारिबो नाही, ब्लड वॉल्यूम टाको बढ़ी पारिबो नाही. दैट मीन्स सोडियम पोटासियम रिटेंशन हे पारिबो नाही. सिमिलरली एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन टाको जदी ब्लॉक कर दो, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को जदी डीएक्टिवेट कर दो बा इनहिबिट कर दो. सिमिलरली रेनिन को जदी इनहिबिट कर दो डायरेक्टली, रेनिन इनहिबिटर आल्सो प्रेजेंट. ये जो ग्रुप रो डायरेटिक हैला बा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हैला, एंजियोटेंसिनोजेन हैला बा रेनिन इनहिबिटर हैला, से माने सब ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाउथिले. तेणु से ब्लड वॉल्यूम को बा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैला माने कोन करथिले सब ब्लड वॉल्यूम टा को बढ़ाई देथिले. ब्लड वॉल्यूम टा रिड्यूस हे गले से कोन हबो ना ब्लड प्रेशर टा
कमी. We have already seen in the figure how blood pressure, blood volume increases. Now, these are the causes. Sodium potassium retention होतला तेणु आमे डायरेटिक यूज करिवा. एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट हवा पई गोटे एंजाइम यूज होतला तेणु से एंजाइम को आमे इनहिबिट करिवा. एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन जेंटा को ब्लॉक कर दबा. एंजियोटेंसिन ब्लॉकर बा डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर रेनिन टाको इनहिबिट कर दबा. दैट मीन्स आमे जदी सेही स्टेज रे ताको ब्लॉक करिबा बा इनहिबिट करिबा दैट मीन्स प्रतिरोध करिबा तले नेक्स्ट स्टेज को कन्वर्ट ही करिबा. एज ए रिजल्ट ब्लड वॉल्यूम टाको कमी जिवो. ब्लड वॉल्यूम कमी गले ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर डिक्रीज करबो. सो फर्स्ट 4 are involved to reduce the blood volume: diuretic, angiotensin converting enzyme or angiotensin blocker or direct renin inhibitor. Now comes to the beta adrenergic blocker. Koichi beta adrenergic blocker. Beta receptor present in the SA node or myocardial region. यदि हमें ताकू ब्लॉक कर दबा ताले जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन द स्पीड टाको कोन हबो कमी जे. यदि कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कमी गला ब्लड रो आउटपुट टाको कमी जिवो. ब्लड रो आउटपुट टाको यदि कमी गला ताले ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर टाको कमी जिवो. ताले बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर प्रोप्रानोल और मेटोप्रोलोल एटिनोल और बीटा और अल्फा एड्रेनर्जिक blocker. Peripherally it is acting alpha adrenergic blocker. कौन करिवो स्मूथ मसल टाको कंट्रैक्शन हवा पई दबो. यदि स्मूथ मसल कंट्रैक्शन न होला जे ब्लड प्रेशर टाको मेंटेन ही रही. अल्फा रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट peripherally. Then vasodilator यदि ब्लड वेसल गुडा को डायलेट कर दबो automatically blood pressure कमी. So these are the group of drugs which helps to reduce the blood pressure, or it is also called antihypertensive agent or drugs. How to remember the classification of antihypertensive agent? A, B, C, D. A means angiotensin converting enzyme or alpha blocker or beta blocker or calcium channel blocker or centrally acting drugs, or D means diuretic, direct renin inhibitor or dilator. A, B, C, D. These are the classification of antihypertensive drugs. Let us discuss about diuretics. First, thiazide diuretics, potassium sparing diuretic or loop diuretic. See in the figure how or where it is working. The thiazide diuretic inhibits the active exchange of chloride sodium in the cortical region of the nephron or cortex region. Cortical dilating segment of the ascending loop of Henle, or the loop of Henle, ascending loop of Henle, descending loop of Henle. So thiazide are mainly acting on the loop of Henle. Similarly, potassium sparing diuretic inhibit the reabsorption of sodium in the distal convoluted tube. We have already discussed about the glomerulus, Bowman's capsule, proximal convoluted tubules, loop of Henle, distal convoluted tubules, collecting ducts in anatomy or in urinary system. So thiazide diuretic are acting on loop of Henle or ascending loop of Henle. Potassium sparing diuretics are inhibit the reabsorption in the mainly in the distal convoluted or tubules or collecting ducts. Loop diuretic are inhibit the exchange of sodium potassium in the ascending loop of Henle. So this is the region where the diuretics are working. The main purpose is the sodium potassium
excreted out from the body. How the sodium or potassium are excreted out from our body. So the thiazide diuretic example is your hydrochlorothiazide or chlorthalidone or indapamide. So mechanism of action of thiazide diuretic act on the distal convoluted tubule of the kidney to block the sodium reabsorption. So they interfere with the sodium transport across the tubules in nephron and block the sodium influx in the blood. So this action increase the renal excretion of water along with sodium chloride, potassium and calcium. ଯଦି ବଡିରୁ sodium, potassium, calcium ଏଗୁଡ଼ା ବାହାରିଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବ୍ଲଡର ଭଲ୍ୟୁମ ଟାକ କମିଯିବ। ଯଦି ବ୍ଲଡର ଭଲ୍ୟୁମ ଟାକ କମିଗଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କମିଯିବ। So see in the figure how sodium is excreted out from our body. Now, from blood, potassium is entered to the distal tubule and sodium chloride co-transfer channel is opened. So the sodium is excreted out, or sodium and chloride are not reabsorbed, resulting in the increase the excretion of these ion. So when the sodium is excreted out, blood volume decreases. So the clinical uses or therapeutic uses of diuretics are mainly in the hypertension or idiopathic hyperkalemia, calciuria or nephrogenic diabetes insipidus or osteoporosis. So these are the therapeutic uses of diuretics or mainly thiazide diuretics. तमें कौन थायराइड डायरेटिक गुड़ाक आम हाइपरटेंशन रे यूज करि परिबा काहेकि सोडियम टाको हम ब्लड रु बा हम बॉडी रु बाहर कर दोछ बाहर करले ब्लड वॉल्यूम टाको कमी जाउछ। सो यदि अधिक थायराइड डायरेटिक ब्लड रु सोडियम टाको बाहर कर दो बा पोटेशियम कैल्शियम टाको बाहर कर दो कोन हाइपोकालेमिया और हाइपरयूरिसेमिया or hyperglycemia. Well, these are the adverse effect of thiazide diuretics. So in next class we will discuss about other diuretic and other classification of antihypertensive drugs. Thank you.